So write a question. Take a question down. A ship of length 120 meters, displacement 9,100 tons, floats at an even keel draft of 6.5 meters in fresh water, density 1.00 tons per meter cube. MCTC equals 130. TPC seawater equals 16.5. LCB 2.30 meters forward of its ship. LCF 0.6 meters aft of midship. Calculate the new drafts when the vessel moves into seawater of density 1.024 tons per meter cube. Okay. तो सबसे पहले तो what case is this? Case 1 or case 2? सर थोड़ा कैमरा ऊपर करना अपना. Case 2, sir. 2, sir. Case 2. Okay. So we are in case 2. And we are going from fresh water to salt water. Or we are going from Haldia to Chennai. So we will trim by Stern. We will trim by stern. All right. Okay. So for case 2, let us write down our formula. TC is equal to W into FB over MCTC bracket delta S minus delta R और delta F एक ही बात है over delta initial. Initial is which? Delta R. Delta R or delta same thing. Okay. What is the value of FB in this case? $2.9. Correct. Absolutely right. FB is this is forward of midship, this is after midship. So it will be added. 2.3 plus 0.6 is equal to 2.9. अगर दोनों ही forward होते, it would have been subtracted. अगर दोनों ही aft होते, it would have been subtracted. So now the question is, TPC and MCTC change with density. Which MCTC do we use? Initial or final?
Final. All right. So please remember, always, this is a golden rule. Asterisk mark करके लिख रहा हूँ. Always TPC. Always use TPC and MCTC for final condition. जहां मैं जा रहा हूं, so I am going to sea water. TPC is already given to me for sea water. MCTC कहाँ का है मुझे पता नहीं है. It is left in ambiguity. Whenever there is an ambiguity, I will use the ambiguity to my advantage by writing one line. Assume MCTC given is for final condition. You assume it because it is in doubt. Supposing this was given to you as fresh water, then what would you have done? कन्वर्ट कर लेते हैं वो डॉग वाटर की तरह. Correct. तो फिर अगर ये फ्रेश वाटर होता, you would have divided by 1, multiplied by 1.024 and you would have converted it. But इस केस में ये नहीं दिया हुआ है, तो ये एम्बिग्विटी में छोड़ा हुआ है. तो एम्बिग्विटी को मैं एज्यूम करके एक लाइन लगा के अपने एडवांटेज में ले लूंगा. That means this MCTC given to me is for salt water. Now you put the values and tell me the value of TC. थ्री 3.42 ज्यादा. नहीं नहीं गलत है. 4.872. Correct. 4.872. Correct. .872 यूनिट्स क्या होंगे इसके? सेंटीमीटर. Correct. Absolutely right. Centimeters. By ton. इसके यूनिट्स सेंटीमीटर में कैसे आएंगे वो भी बता देता हूं. W is tons, FB is meter, divided by MCTC, टन मीटर पर सेंटीमीटर. ये टन्स पर मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में भी टन्स पर मीटर क्यूब. कैंसल कैंसल, टन मीटर कैंसल, सेंटीमीटर goes on top. So TC units will be centimeter in this formula. ठीक है, is that okay? तो ये मेरा TC आ गया. ओके. अब TC आ गया तो TA निकाल लो. TA is equal to TC into
AF upon LBP. .872 into AF. H is 60 meters. L by 2 is 60. LCF is 0.6 meters aft. 69.4. 59.4. Yes, sir. 59.4. 60 मीटर पे मिडशिप आता है. So TA will be how much? 2.412. 2.41. 2.412 centimeters. Okay. TF निकाल लो. TC minus TA. .46. All right. अब क्या करूं? अब डॉक वाटर अलाउंस निकालना पड़ेगा. राइट. सो अब मुझे डॉक वाटर अलाउंस निकालना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक. सो डॉक वाटर अलाउंस आई एम सो देयर विल बी अ मीन राइज और सिंकेज. Rise. देयर बी अ राइज. अभी मैं मीन राइज पे आ रहा हूं. क्यों? क्योंकि मैं हल्दिया से चेन्नई जा रहा हूं. सो देयर विल बी अ मीन राइज. सो for the formula for that, for mean change of draft, for mean change, mean change in draft, that means sinkage or rise is given by a formula W upon TPC into delta S minus delta R upon delta initial. This is another formula where, remember, the bracket is the same as the TC. This is W upon TPC. This is your dock water allowance formula. So mean rise will be equal to 9,100 upon TPC for the final destination 16.5, 1.024 minus 1.00 upon 1.00. centimeter. 13.236 centimeter. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we make a drafts table. Now we make a drafts table. Forward, aft, initial drafts 6.5, 6.5. This is my initial drafts.
Then I have a mean rise. So mean rise will be minus and minus. दोनों जगह माइनस होगा. Convert to meter. 0.13 0.1324 0.1324. Now I come to TFTA. I am going by stern. Since I am going down by stern, so the sign of TA will be plus because I am trimming by stern. And TA will be plus, so TF will be. ये समझ में आ गया? Is this okay? Yes, sir. All right. So TF, very carefully convert this to meter. Sir, forward 6.343, 0.343. half 6.390. सबका सेम आ रहा है? Is everybody getting the same answer? Yes, sir. हाँ जी. Now the doubts. Any doubts in the question? Clear है? Is the question okay with everybody? Basically डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूले की. अगर वो प्लस और माइनस के साइन को संभाल लेना बस. सर ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट सही है? फॉरवर्ड ड्राफ्ट सही है. क्यों, क्या हुआ, क्या डाउट क्या आ रहा है? ठीक है. Why is the doubt? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कमती ही होगा नेचुरली. सो दैट्स फाइन. ये माइनस है, ये प्लस ही होगा. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ठीक है. ठीक है सर. All right. Let's go to the next question. Take another question. एक क्वेश्चन और लो. Okay, another question. A ship 90 meters long displacement 5,200, displacement 5,200, floats at a draft forward
4.95, aft 5.35. When in sea water, density 1023 kg per meter cube. Waterplane area, 1100 square meter. GML 95 meters. LCB 0.6 forward of midship. LCF 2.2 aft of midship. Calculate the new drafts when the vessel moves into fresh water. Density 1002 kg per meter cube. So ये कौन सा केस है? Case number 1. We are going to trim by. Head. That means the trimming moment will be by head. Trimming moment will be by head. Okay. So in this question, ये WPA का क्या मतलब हुआ? सर यहाँ से टीपीसी निकल जाएगी A by 100 into 1.025. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. और टीपीसी मुझे कहाँ की चाहिए? टीपीसी चाहिए सर फ्रेश वाटर की. बिल्कुल ठीक. फाइनल डेस्टिनेशन की चाहिए मुझे. एमसीडीसी कहाँ की चाहिए? Final. फाइनल की. ओके. सो लेट मी स्टार्ट बाय टीपीसी फर्स्ट. सो टीपीसी मुझे फ्रेश वाटर की चाहिए. इज इक्वल टू डेंसिटी फ्रेश वाटर into water plane area divided by 100. So 1.002 into water plane area 1100 divided by 100. $11.022 tons per centimeter. अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एमसीटीसी पे. इज इक्वल टू W into GML upon 100L. So W 5200, GML 95 over 100 into 90. ओके. सर तो मतलब एमसीटीसी में सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में सिर्फ जीएमएल चेंज होती है. करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि ये फ्रेश वाटर की ही जीएमएल. बिल्कुल ठीक. ओके. बिल्कुल ठीक. तो देयरफॉर
अब आ जाओ फॉर्मूले पे, टीसी इन सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एफ बी अपॉन एम सी टी सी डेल्टा एस माइनस डेल्टा आर या डेल्टा एफ एक ही बात है, अपॉन डेल्टा इनिशियल, इनिशियल क्या है मेरा एस, and this will trim me by head. So put the values 5200। अच्छा एफ बी कितना है, 2.8 2.8 2.8 अपॉन एम सी टी सी 54.889। अच्छा एस की क्या डेंसिटी है मेरी 23 1.023 माइनस एफ की मेरी क्या डेंसिटी है 2 अपॉन 23। फाइव पॉइंट फोर फोर फाइव 5.445 सबका सेम आ रहा है। हाँ जी सर। ओके सो मेरा टीसी तो मेरे को मिल गया। अब मैं आता हूं टीए पे, टीए इज इक्वल टू टीसी इंटू एएफ या एलसीएफ अपॉन एलबीपी इज इक्वल टू 5.445 इंटू, अच्छा 45 माइनस 2.2 42.8 42.8 डिवाइडेड बाय 90। टू पॉइंट फाइव एट नाइन सर 2.589 सेंटीमीटर्स हो गया। ठीक है सो टी एफ इज इक्वल टू टी सी माइनस टी ए। ये कितना आता है 5.445 माइनस 2.589 2.856 2.856 सेंटीमीटर्स। ओके केस नंबर 1 में तो सिंकेज होती है, सो देयर विल बी अ मीन सिंकेज, सो ms is equal to w upon tpc bracket open delta s minus delta f upon delta s initial, so 5200 divided by 11.022 1.023 1.002 1.023।
सर MS आया है 9.685 9.685 685 सबका सेम आ रहा Yes. है ओके सो अब मैं टेबल बनाता हूँ ड्राफ्ट का फॉरवर्ड आफ्ट मीन सिंकेज दोनों में प्लस प्लस होगा वेरी वेरी केयरफुली ये 2 डेसिमल प्लेसेस इधर जाएगा तो 0.097 0.097 अब टी ए की बारी है मेरा ट्रिमिंग मोमेंट बाय हेड है सो टीएफ का मेरा साइन प्लस होगा और टीए का साइन माइनस होगा अब मैं टीएफ पे आता हूं टीएफ मेरा ये रहा 0.029 और टीएफ मेरा 0.026 5.076 forward, 5.076 forward 5.421, 5.421 21. aft नोटिस अभी भी मेरी स्टर्न ट्रिम है आई स्टार्टेड विद अ हाई ट्रिम stern trimming moment was by head so my trim has reduced but I've still got a final stern trim the thing which I was talking about ठीक है is that okay yes sir it is likely and possible in some other case final trim might become even keel in another question or the final trim becomes down by head that is also possible so all the three possibilities exist depending on what the initial trim is that okay yes sir Yes, sir. okay एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो टेक वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क फॉर प्रैक्टिस एट होम let me know when you're ready to write Ready, sir. okay a vessel of W 22,000 22000 length 160 meters 160 सर W कितना था W 22,000 22,000 length 160 MCTC 280 waterplaning area 3060 3060 LCB 1 meter aft of midship LCF 4 meters aft of midship floats in water of density 1.007 at drafts forward 8.15 aft 8.75 सर फॉरवर्ड कितना था एक बार 8.15 यस सर aft 8.75 ओके सर calculate the new drafts when the vessel moves into seawater density 1.026
1.026. करेक्ट. सर फर्स्ट वाली डेंसिटी क्या है? 1007. 1007. आंसर दे देता हूँ. ओके सर. आंसर लिख लो. फॉरवर्ड ड्राफ्ट 7.995. हाफ ड्राफ्ट 8.639. LCF कितना था? LCF था LCF 4 meters after midship. And LCB was 1 meter after midship. ठीक है, इसको जरा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से ताकि हो जाए, एक बार ये फंडे सारे क्लियर हो जाएं. सो वी आर डन विद दिस. टुमारो आई विल स्टार्ट विद हिंज शिप. ये ए शिप के चेंज ऑफ ट्रिम ड्यू टू चेंज ऑफ डेंसिटी खत्म. ए शिप वाली. तो अगर पास पेपर्स में कोई ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको ए शिप के चेंज ऑफ ट्रिम के, तो यू कैन straight away attack those questions now. सर जो डॉक वाटर अलाउंस का फॉर्मूला है वो वाला हम लोग यहाँ नहीं यूज कर सकते क्या? क्योंकि वो एक 1.025 सॉल्ट वाटर वैसा ही लेके उस फॉर्मूले को बनाया है, लेकिन ये फॉर्मूला जो हम मीन सिंकेज वाला यहाँ लगा रहे हैं और वो डॉक वाटर अलाउंस का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, तो उसको यूज नहीं कर सकते. See, if you notice, fresh water allowance is W upon 40 TPC. यस सर. Fresh water allowance is W upon 40 TPC. Dock water allowance is fresh water allowance into difference of densities यस सर. upon 0.025. हाँ सर. अब मैं इस वाले को अगर इधर डाल दूं हाँ और अपने कैलकुलेटर में जरा 40 को 0.025 से मल्टीप्लाई करो. आ रही है सर. तो वैनिश हो गया, गायब हो गया. हाँ सर. तो आई एम बैक टू माय फॉर्मूला. नहीं, पर इसमें हमने नीचे में भी तो अपना है ना सर, हम लोग जो इनिशियल डेंसिटी ले रहे हैं ना डिनोमिनेटर में. सो द ओनली डिफरेंस इज कि इस वाले में मेरा रिस्ट्रिक्शन है, ये फ्रेश वाटर अलाउंस तो मुझे दे रहा है फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर और वाइस वर्सा. ओके सर. एंड डॉक वाटर मुझे दे रहा है फ्रॉम सी वाटर 0.25 टू एनी अदर डेंसिटी. यस सर. लेकिन सपोजिंग आई गिव यू अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी डेंसिटी टू एनी डेंसिटी, तब क्या करोगे? तो सर जो आपने लिखा है वो फॉर्मूला हम लोग जेनरिक किसी भी डेंसिटी में यूज कर सकते हैं ना? प्रिसाइसली, दैट्स द पॉइंट. तो मतलब वो डॉकवेट फॉर्मूला अलाउंस का फॉर्मूला हम लोग दिमाग से निकाल के ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो जनरली अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. सो वो अब ये फॉर्मूले को आप कहीं पे भी फिट करो, कहीं अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 1004 से 1006 पे जा रहे हो तो भी आप वो ये अलाउ करोगे. हाँ. ये है उसमें फर्क. ओके सर. ठीक है, चलो सी यू देन, सी यू टुमारो. बाय. बाय सर. थैंक यू सर.